All right, first up, as we played out the entire address of Prime Minister as he returns back home. And now, even when it comes to taking a cryptic jibe at the opposition indirectly for boycotting the Parliament inauguration that will be taking place on coming Sunday, which is the 28th of this month, saying that during this community event in Sydney, which he had attended a few days back, the entire Australian opposition leaders, along with all former Prime Ministers, were present in the audience to welcome and to host Prime Minister Narendra Modi. And that is the strength of democracy, when everyone is together for the sake of the country. So here is Prime Minister Narendra Modi indirectly asking the opposition party leaders to shed their inhibitions and be a part of democracy, as India is itself the largest democracy in the world, and an example should be set when it comes to the unity of the country and not just looking at their own political and personal ambitions. हिंदुस्तान के लोगों ने इसको देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति। ऐश्वर्या फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, गुड मॉर्निंग। यही एक संदेश शायद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को जा रहा है कि ये एक हमारा जो धर्म है और राष्ट्रीय धर्म है, अगर हम बात करें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, और यहां पर कितनी देर तक अवॉइड या इग्नोर कर सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स, क्योंकि आखिरकार उनको नई बिल्डिंग में तो आना ही पड़ेगा ना जब मानसून सत्र शुरू होगा। देखिए, इसीलिए शायद जो एनडीए का जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो भी विपक्षी दल हैं उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि वो इस हिस्टोरिकल इवेंट पर, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए और उसके साक्षी बनने के लिए तमाम विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे, क्योंकि ये संसद देश की है, ये संसद उन तमाम लोगों की है जो रिप्रेजेंट करते हैं 145 करोड़ लोगों को भारत के। और इसीलिए एनडीए ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला था, और आज प्रधानमंत्री ने खुद पालम एयरपोर्ट से यह बात कही और एक इनडायरेक्ट अटैक भी किया अपोजिशन पार्टीज पर कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ जब पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता वहां पर, तमाम लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बोल रहे थे उस समारोह में मौजूद थे। और यही एक ताकत होती है डेमोक्रेसी की, और इसी ताकत को भी यहां भारत के अंदर दर्शाना चाहिए। हमने देखा है पिछले कई सालों में और पिछले कई वक्त में जब पार्लियामेंट चल रहा था तब विपक्षी दल उसको बॉयकॉट करते थे, आए दिन विपक्षी हंगामा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं संसद चल नहीं पाता है। और इसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री संसद से पहले जब पहली स्पीच होती है प्रधानमंत्री की, उस दौरान हमेशा विपक्ष को एकजुट करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं आइए और साथ में बैठकर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उस परिणाम कुछ विपरीत होते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस बार जब इनॉग्रेशन होने वाला है 28 मई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उस दौरान जब तमाम अपोजिशन पार्टीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति ही इनॉग्रेट करें उसको, अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो ये आर्टिकल 79 के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और इस वजह से वो बॉयकॉट करते हैं। लेकिन तमाम एक बार फिर से एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि विपक्षी दलों को आना चाहिए, और इसी से जब विपक्ष और पक्ष साथ में खड़ा होगा तभी इस डेमोक्रेसी को और मजबूती मिलेगी और यही डेमोक्रेसी की आवाज को बुलंद करेगा। So if you can tell us about that joint statement by the like-minded parties, because the number only went on to increase as far as, you know, multiple opposition parties. I guess the number is now touching almost 20, Aishwarya, that they have decided to boycott the inaugural ceremony. And it's not one issue that time and again they have been trying to raise. There have been several issues that have now been associated with the inauguration of the new parliament complex.
Well, YRCP and Biju Janata Dal had been clearly stating that they are going to attend the inaugural session. Apart from it, it is the TRS and Aam Aadmi Party and Congress and other 17 political parties. So total of 20 political parties had issued that joint statement and said that they will be boycotting the inaugural session of inauguration ceremony of the new parliament building. It is BRS who has to decide, and today in their meeting they will be deciding that where they will be coming to attend the inauguration ceremony, because the sources within the cabinet secretary clearly had informed us that all the chief ministers of the states and union territories, as well as the political party heads, the member of parliaments and the secretaries of different ministries have been sent out physical and non-physical invitations separately for the historical event to come up. There are different political leaders in the government who had hit out at the opposition parties, slamming that when there were past prime ministers who had inaugurated parliament annexure building and library, why can't the current prime minister inaugurate the parliament building? And there is not anything which is unconstitutional according to them. But certainly the opposition parties leading the attack and stating that the entire opposition is together, and they will not be coming and they will be boycotting the inauguration ceremony. But ultimately it is those member of parliament who have been elected by the people of this country who have to ultimately come to the new parliament building to attend the parliament sessions in the upcoming years. All right, Aishwarya, please to stay on with us, because as Aishwarya has been pointing out, there have been several opposition parties. The number have already touched 20 of them, and they have been now saying that their main objection is that the president is not being invited to inaugurate and open up the new parliament complex, and they have been citing that this is a clear violation of the Indian constitution. Let's talk to you about, even when it comes to the opposition party leaders and when it comes to the invitation that has now been extended to them, the Prime Minister Narendra Modi, who has drawn a collective boycott calling from the opposition. What has started as isolated calls for boycott today has also precipitated to 20 political parties coming together to criticize an authoritarian prime minister and his government. This is what has been the charge, as we have also seen from Rahul Gandhi calling it as arrogance in the collective statement. As far as the joint statement of like-minded parties that has been issued, they say that the soul of democracy has been sucked out, and Prime Minister Narendra Modi's decision to completely sideline President Draupadi Murmu is not only a grave insult but a direct assault on democracy. Later, even when it comes to the AIMIM chief, who also threw his weight behind the call, taking the number of political parties to give the historical event a miss, turning now to 20. Mr. Nasser Hussain of